welcome to our channel. So today we are discussing about classification of conversion ने जाउची कोन conversion by negation. तो कोन गोटे भूल रही जाउकी कि conversion by negation में जाउची सेटा तो O proposition cannot be converted because it avoids the rules of conversion. So जोटा कि थिला fourth rule को एटा avoid करथुला जे कि a non distributed term of conversion cannot be distributed in the converse. So it avoids the fourth rule of conversion. Kintu but some logicians tried to find out the conversion of O proposition. तले किछि logician कोन करले ना O proposition ना conversion मार करिया पई कि चेष्टा करले. So which is known as conversion by negation. तले कोन कहले से O proposition cannot be converted because it avoids the rules of conversion. तले से कोन कहले कि O proposition converted तर converse बाहर परिबो नै कोन पई ना ये अवॉइड करूची रूल्स को हला किंतु but some logician tried to find out the conversion of O proposition. किछि logician चेष्टा कले O proposition ना conversion बाहर करे पई. तो देखियो कोन कोन बाहर कले जोटा कि which is known as conversion by negation. जोटा कि conversion by negation भाबरे जणा सुन हला. तो such as converted होची O proposition. तो वर्तमान से logician केमति बाहर करथला हमें सेही प्रोसेस को फॉलो करिवा. तो फर्स्ट रहबो converted रहला O proposition. तो मु लिखिली सिंबॉलिक एग्जांपल भाबरे sum s is not p हला. तो sum s is not p लिखिला परे तार कन्वर्जन I proposition तो एठी sum s is not dash p नेली हला. p तार विरुद्ध पद होची not dash p हला. तो I proposition मु कोन नेली ना sum s is not dash p किंतु मु कन्वर्स कोन बाहर कर तार converted to converse बाहर करली I proposition रहला sum not dash p is s हला. This is not an actual conversion because it avoids the rules 1 and 2 हला. तो इतना रूल को अवॉइड करूची 1 रूल को और 2 रूल को of the conversion. So it is called fallacy of conversion by negation. से कहला कि this is not an actual conversion. तो I proposition ना converse O हेबो नाही कोन पई ना ये फर्स्ट रूल legitimate transportation between subject and predicate एक कथा भी हो नाही. आउट कथा होची ए जो predicate टर्म देला एटा होची p किंतु हमर एठी जो converse ड्रॉ होईची सी होची not dash p. So p और not dash p दिटा एका कथा नुहे हला. तो ये होची अलग कथा तेन करी एटा होची fallacy means होची some logical error और confusion. जेतो बडा लॉजिक रे कोनसी confusion आसी जाय त हम ताको fallacy रो ना देई थाउ. तो वर्तमान fallacy टा कोनला this is not an actual conversion. ताले O proposition ना I proposition जो converted जो converse मु ड्रॉ कली हला से अकॉर्डिंग टू सम लॉजिशियन तो सेटा भूल. तो सेति लागि सेटा किछि कंफ्यूजन रहउची बा सेतरा रूल नंबर 1 और 2 को फॉलो करू नाही. तेडु करी this is not an actual conversion. ताले O proposition गोटे actual conversion नुहे कोन पई because it avoids the rule 1 and 2. रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को ये अवॉइड करची of the conversion. So it is called fallacy of conversion by negation. तो याकु हमें fallacy of conversion by negation बोलिका कहि थो. तो एमति तमर एग्जाम रे क्वेश्चन भी आसपरे fallacy of conversion by negation कोन व्हाट इज fallacy of conversion by negation हला. तो तमे ए कथा लेखिबो विथ एग्जांपल. तो जिबे एतिकला थैंक यू.